7 babies killed after huge fire at Delhi Children's Hospital. Tonight our hearts are heavy as we bring you the tragic news of a devastating fire that engulfed a children's hospital in the Vivek Vihar area of East Delhi. Late Saturday night, chaos erupted as flames tore through the baby care center. The Delhi Fire Services received an urgent call at 11:32 p.m., prompting a swift response with 16 fire tenders rushing to the site. Our teams worked tirelessly to rescue 12 newborns from the inferno, stated a spokesperson from the Delhi Fire Services. Despite our best efforts, we tragically lost 7 precious lives as they received treatment at the hospital. कि एक बेबी केयर सेंटर में आ गए। हमने शुरू में 7 टेंडर भेजे थे क्योंकि हॉस्पिटल जैसी जगह थी। हम लोगों ने बहुत कोशिश की, 12 बल्कि बच्चों को निकाला भी गया। वहाँ सेवा दल का एक ग्रुप था, उनके संग निकल के, आपने फोटो में देखा होगा। और बाद में पता लगा कि हॉस्पिटल में, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे थे ये, और जो है इनकी 6 की करीब डेथ हो गई। इसमें बहुत दुखदायी घटना है। आग इसलिए बढ़ गई कि वहाँ पे ये बताया गया है कि वहाँ पे कुछ ऑक्सीजन के शायद सिलेंडर थे और सिलेंडर थे, उनमें ब्लास्ट हो गया। इसी वजह से आग केयर सेंटर में ना रह के, बेबी केयर सेंटर में ना रह के बगल वाले घर पे भी चली गई थी, और इसीलिए फायर का इतना फास्ट स्प्रेड हुआ। टोटल हम लोगों ने करीब 16 गाड़ियां बाद में भेजी थी, क्योंकि बच्चों का मामला था, बगल में घर फेंक रही थी। बट अनफॉर्चुनेटली जो है 6 बच्चों को नहीं बचाया जा सका। The loss of these innocent newborns has left a community in mourning. Families gathered outside the hospital, grappling with unimaginable grief and disbelief. As investigators work tirelessly to determine the cause of the fire, questions of accountability loom large. The owner of the hospital faces scrutiny as authorities seek answers in the wake of this heartbreaking incident. The loss of these innocent lives is deeply distressing, stated Chief Minister Arvind Kejriwal. We are committed to a thorough investigation, and those found responsible for negligence will face the full force of the law. In the midst of this tragedy, the resilience of the community shines through. A candlelight vigil was held outside the hospital, a poignant reminder of the lives lost and the unity of those left behind. Tonight, we stand in solidarity with the families affected by this tragedy. As investigations continue, we hold on to hope for answers and healing in the days ahead. That's all for now. For more updates, keep watching TSW News channel. For more updates, subscribe to our YouTube channel TSW News, news that reveal the truth, and visit our website www.topstoriesworld.com.